Hello students, today I am going to teach you Computer Standard 3rd, chapter number 7 and the chapter name is Introduction to Multimedia. So students, in this chapter we learn about multimedia, that's introduction, installing a multimedia CD or DVD, how to install a multimedia, using the multimedia software and Windows Media Players. So students, open your page number 71. Okay. First, introduction. As the name suggests, multimedia means a number of mediums used to convey a message or information. Multimedia means number of mediums that used to carry message or information. Okay. So multimedia can be defined as an application. It is also defined as an application that is combination of many media forms. It is the combination of many media forms such as text, sound, videos, still images, graphics or animation to convey information. Okay students, so multimedia means it is an application that is combination of many media forms. Okay, for example, text, sound, videos, all these to convey information, and it is also a means of number of mediums used to convey a message or information. So students, children, you watch your favorite cartoon, okay, listen to songs, play games, and nowadays educational CDs and DVDs based on your course book are also available, है ना. So all these things are multimedia based. These all things, that's education, online education, entertainment, advertising, playing games and making movies and other game software, these all are what? These all are the multimedia, and that the CD and DVDs based on your course book are also available in these forms. Okay, so these all things are multimedia based, and a complete multimedia system should have the some of these things, that a CD-ROM drive and speaker. एक कंप्लीट मल्टीमीडिया सिस्टम होने के लिए क्या क्या चाहिए हमें? CD-ROM ड्राइव, स्पीकर and a sound card, joystick, color printer, scanner, microphone and headphone. So students, this is about introduction. Okay. Now next, installing a multimedia CD or DVD. How we install a multimedia? So first, insert the CD or DVD in the CD-ROM drive. Okay, first we have to insert CD or DVD in the CD-ROM drive. Then after double click the computer icon, जो आपके डेस्कटॉप में है कंप्यूटर आइकन, वहाँ पे डबल क्लिक करिए. फिर आफ्टर दैट डबल क्लिक द CD DVD icon. Then the CD opens and its contents are visible. Okay. Then after double click the setup icon in the CD contents. Then follow the instruction to install the software. In this way you can install multimedia CD DVD. Okay. After the installing is completed, multimedia software is ready to use. Now using the multimedia software. So once a software is installed on your computer, जब एक बार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
इंस्टॉलिंग मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर में, देन यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू वांट. ओके, यू कैन यूज़ इट वेन एवर, आपको जब चाहिए वो तब आप यूज़ कर सकते हैं. सो स्टेप्स क्या है इसके लिए? फर्स्ट, क्लिक द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑल प्रोग्राम. फर्स्ट वी हैव टू क्लिक स्टार्ट बटन, then after click all program, then click the currently installed software icon to activate it. then after हमें क्या क्लिक करना है? click the currently installed software, जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वहाँ पे हमें क्लिक करना है to activate that software that you have installed. Okay students, now next one, Windows Media Player. Okay, so you can play an audio or video DVD or CD on your computer with the help of Windows Media Player. You can play audio or video, आप कुछ भी play कर सकते हो, audio कर सकते हो, video कर सकते हो by the help of or with the help of what? Windows Media Player, with the help of this Windows Media Player. Okay, so steps to start the Windows Media Player. steps क्या है इसके लिए? आप Windows मीडिया प्लेयर्स कैसे स्टार्ट कर सकते हो? फर्स्ट, क्लिक स्टार्ट बटन, देन आफ्टर क्लिक ऑल प्रोग्राम एंड क्लिक विंडोज़ मीडिया प्लेयर, दैट द विंडोज़ मीडिया प्लेयर विंडो विल ओपन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. ओके, इन दिस वे यू कैन ओपन. देन आफ्टर नाउ सर्च फॉर द कैटेगरी फ्रॉम लाइब्रेरी पेन दैट यू वांट टू प्ले. आपको जो भी प्ले करना है वहाँ से आप सर्च करिए. देन आफ्टर कहाँ क्लिक करना? ऑल द आइटम्स ऑफ द सेलेक्टेड कैटेगरीज विद डिस्प्ले ऑन द डिटेल पेन. आप जिसे सेलेक्ट करोगे उसका जो भी डिटेल है वो आ जाएगा. देन डबल क्लिक द आइटम्स दैट यू वांट टू प्ले. फिर आपको जो भी आइटम्स प्ले करना है उसमें क्या करना है? हमें डबल क्लिक करना है. इन दिस वे यू कैन प्ले एनी ऑडियो और वीडियो CD DVD ऑन योर कंप्यूटर with the help of Windows Media Players. Okay, so students, हमने क्या पढ़ा इसमें? Introduction to Multimedia. First introduction, what is multimedia? Okay, then after installing a multimedia CD DVD, how we install multimedia CD or DVDs. Okay, then after using the multimedia software, how we use that multimedia software. Then after Windows Media Players, how we play audio or videos DVD on our computer with the help of Windows Media Player. So all in this chapter, I hope you all understand this chapter number 7. Now students, continue chapter number 8. Okay, page number 79, and the chapter name is More on Tux Paint. More on Tux Paint. So here what we learn in this chapter? First introduction, that introduction about Tux Paint, then after starting Tux Paint, then drawing tool, that's shapes, lines, text, magic tool, stamp tool and quick tool. Okay, so first one, introduction. Tux Paint is a free drawing program. It is a free drawing program designed for young children. It is designed for your young children and it is a free drawing program. Okay, Tux is a free drawing program that are designed for young children, and it has a simple and easy to use interface. That Tux Paint has a simple and it easy that to use interface. Okay, so it also has fun sound effects and encouraging cartoon mascots that help children to use the program, and it provides a varieties of tools for drawing. The Tux Paint provides a variety of tool for drawings. Okay, this about Tux Paint. So Tux Paint is a simple and a free drawing program that are designed for young children, and it is simple and easy to use interface. Okay,
So it provides a varieties of tools for drawing also. So you can download and install it on your computer free of cost. Without any cost you can download it and install it. Okay. So starting TuxPaint, how we start this? So when TuxPaint is installed on your computer, follow some of steps. So first one, click start button. When you install it, first हमें कहाँ पे क्लिक करना है? स्टार्ट बटन में क्लिक करना है. देन आफ्टर क्लिक ऑल प्रोग्राम. देन आफ्टर क्लिक TuxPaint एंड देन क्लिक TuxPaint अगेन. फर्स्ट हमें कहाँ पे करना है? स्टार्ट बटन में. देन आफ्टर ऑल प्रोग्राम. देन आफ्टर TuxPaint एंड अगेन क्लिक TuxPaint that are on your computer. Now students, after that a title screen appears and loading starts. After loading completes, click the mouse or any key to continue or wait for some time. Then the title screen goes away and the main screen appears. In this way you can start TuxPaint. Okay. So हमने क्या किया? फर्स्ट क्लिक स्टार्ट बटन, देन आफ्टर क्लिक ऑल प्रोग्राम, देन आफ्टर क्लिक TuxPaint and then again TuxPaint. Then after a title bar screen or title screen appears and loading enters. Okay, or the loading starts. Then after sometimes or the after some seconds that the loading completed, click the mouse or any key. Okay, click mouse or any key, otherwise wait for some times, and that after that the title screen goes away and the main screen of text bar will be appears and you can start your program. Okay. So next one, drawing tools. So you can already learn some of the drawing tools such as line tool, paint tool, eraser tool, magic tool in previous class. Okay, in your previous class you have already learned. Okay, so some of tools. Now let us learn to use some more tools of TuxPaint. Don't forget to keep the speakers on your system on. It will be a great fun to hear some interesting sounds while using TuxPaint. Okay, while using your TuxPaint, don't forget to keep the speakers of your computer on करना नहीं भूलना, that कंप्यूटर का वो स्पीकर है वो. सो लाइन्स. ओके, फर्स्ट वन ड्राइंग टूल्स में व्हाट? लाइन्स. सो इट हेल्प्स यू टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. लाइन्स हेल्प यू टू ड्रॉ straight lines. That's some of the steps how you draw these lines. First click lines tools, then after select the desired colors from the color palettes. फर्स्ट हमने कहाँ पे क्लिक किया है? लाइन्स टूल में लाइन्स टूल में हमने क्लिक किया है. देन आफ्टर सेलेक्ट द डिजायर्ड कलर्स फ्रॉम द कलर प्लेट. देन आफ्टर क्लिक द साइज ऑफ द लाइन्स फ्रॉम द सेलेक्टर. देन आफ्टर हमें जो जितना लाइन चाहिए वो हमें क्या करना है? साइज में हमें क्लिक करना है. देन आफ्टर होल्ड द माउस बटन प्रेस्ड एंड मूव ओवर द कैनवास टू ड्रॉ लाइन्स एंड रिलीज द माउस बटन व्हेन फिनिश्ड. हमें जब ड्रॉ करना है तब क्या करेंगे? वो माउस जो है, माउस का लेफ्ट बटन हमें क्लिक करते हुए ड्रैग करना है. एंड आफ्टर जब लाइन कंप्लीट हो जाए, देन आफ्टर वी हैव टू रिलीज दैट माउस बटन व्हेन इट फिनिश्ड. You can, in this way you can draw lines. Okay, now next one, shapes. These tools help you to draw some simple shapes. So steps क्या है इसके लिए? First click the shapes tool like the lines tool. In the same way click shapes tool. Then after click the desired color from the color palettes. Then after click the desired shapes from the selectors and click and hold the left mouse button and drag over the canvas to draw the shape. In the same way lines में हमने जैसे किया, in the same way shapes में भी हमें वैसा ही करना है. And release the mouse button when finished.
Okay, then after text, so it helps you to add text or numbers in the drawing area. In your drawing area you can add numbers or text by the help of these tools. So steps क्या है? First click text tool, then after select the desired colors from the color palette in the same lines में और shapes में हमने किया वैसा ही. Then after select the what? Select the desired text style, जो भी styles आपको लिखना है from the selector. Okay, then after click on the canvas and a cursor appears. एक cursor आएगा. Then after now you can type the text. आपको text type करना हो text कर सकते हैं, आपको number type करना हो number कर सकते हैं. Click on the canvas to move the line to the desired location. In this way you can write any numbers or text by the help this text tool. Now students, next one, magic tool, stamp tool and quick tool. Okay, first one magic. The magic tool help you to give special effects to your drawing. ये क्या देगा? स्पेशल इफेक्ट देगा आपको आपके ड्राइंग को. सो फर्स्ट क्या है? क्लिक द मैजिक टूल. फर्स्ट click the magic tool, then after click the magic effects from the selector. Then after two buttons on the lower side of the selector appears. Two buttons आएगा नीचे. So click and drag around the pictures to give the special effects if the left button is highlighted. Then after click only once over the picture to give the effects if the right button is highlighted. Okay, in this way you can add any effects on your or the to your drawings. Okay, in this way you can use magic tools. Now stamp tools. So this tool will help you to paste images of animals, plants, vehicles, peoples, etc. These tools, these stamps tools, what will help? You will help these tools to paste images of anything, animals, plants, vehicles, peoples, all these. Okay, so steps क्या है इसके लिए? First one, click stamp tool. Stamp tool को हमने click करना है and the list of stamps appears in the selector. एक list आएगा. Then after use the left and right arrow to choose the category you want. आपको जो भी चूज करना है उसमें हमें क्या करना है? क्लिक करना है. ओके, सो क्लिक ऑन द स्टैम्प्स ऑन योर चॉइस. फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइगर रखना है तो उसमें टाइगर में सेलेक्ट करना है. इन दिस वे यू कैन स्टैम्प. सो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल टूल और विद द हेल्प ऑफ दिस टूल्स, कंट्रोल टूल एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ द स्टैम्प्स. जो भी अगर आपको एक पिक्चर, टाइगर का पिक्चर वो बड़ा करना है, छोटा करना है तो किससे करना है? कंट्रोल टूल. बाय द हेल्प ऑफ कंट्रोल टूल you can increase or decrease the size of that stamps. You can also flip it vertically or horizontally. आप इसे सीधा कर सकते, उल्टा कर सकते, in any way. And click on the canvas to place the images of stamp that the selected stamps. In this way you can use this. Okay. Now last one, quit tool. So clicking the quit tool allow you to exit from the text paint. क्विट टूल हमें क्या करता है? हमें टेक्स्ट पेंट में से हमें क्या करना है? मूव होना है. ओके, सो हाउ कैन वी क्लोज दिस टेक्स्ट पेंट? सिंपली क्लिक द क्विट टूल्स and then after you can close these text paints. Okay, so students, I hope you all understand this. More on text paints. तो हमने इसमें क्या पढ़ा है? फर्स्ट वन text paint इंट्रोडक्शन. देन आफ्टर ये स्टार्टिंग टेक्स्ट पेंट स्टार्ट कैसे करते हैं ये हम. फिर ड्राइंग टूल्स में हमने लाइंस पढ़ा है, शेप्स पढ़ा है, टेक्स्ट पढ़ा है, मैजिक टूल, स्टैम्प टूल्स एंड क्विट टूल्स. ओके, सो आई होप you all understand this. Okay, thank you.